Dear students, as we begin the second term of this academic year, we at St. Anne's welcome you back to an exciting learning experience. The beautiful thing about learning is that nobody can take it from you. And what better way to start the term than to have a twin celebration of National Education Day and Children's Day? All good things begin with a prayer. So let's bow our heads and get into the presence of God as your teachers lead you in prayer. May the children entrusted to us grow up to be always respectful, kind, and gentle. Lord, make our students imitators and strong believers in love, non-violence, perseverance, faithfulness, and honesty. May these values abide in them, enabling them to help transform the society. Give them the courage to use their talents in your service for the betterment of our country. Lord Almighty, we place all the children of our country in your hands as parents, teachers, and adults. Guide us to bring them up with love and care. Help us to understand those with special needs. Guide us to take steps to stop child labor, female infanticides, and exploitation of children. We make this humble prayer to you, our Lord. Amen. ईश्वर, मैं आपसे अपने छात्रों के लिए प्रार्थना करके आपसे आशीर्वाद चाहती हूँ। मैं अपने छात्रों के सुख और सुरक्षा के लिए आपसे प्रार्थना करती हूँ। उन्हें स्वस्थ रखें, उन्हें जीवन में सफल बनने में मदद करें, उन्हें हर कदम पर मार्गदर्शन करें, उन्हें अच्छी बुद्धि, अच्छा ज्ञान और समझ दें। आपकी कृपा की छत्र छाया में वे फले, फूले और आराम पा सके। हे दयालु प्रभु, कृपया मेरी इस प्रार्थना का स्वीकार करें। हे आमच्या स्वर्गीय पित्या, आजच्या या विशेष दिवशी मी अखिल जगातील लहान बालकांसाठी तुझ्याकडे विशेष प्रार्थना करीत आहे, जी अनाथ आहेत, अन्याय अत्याचार सहन करीत आहेत, युद्धामुळे ज्यांचं जीवन कठीण झालेलं आहे, त्याचबरोबर कोविडमुळे ज्यांचे आईवडील या जगातून निघून गेलेले आहेत, बालमजूर म्हणून काहींना जीवन जगावं लागत आहेत, काही रस्त्यावर आहेत। प्रभू, वेगवेगळ्या अंगांनी छळली गेलेली, त्रासली गेलेल्या प्रत्येक बालकासाठी आज मी तुझ्याकडे प्रार्थना करीत आहे। हे प्रभू परमेश्वरा, तुझ्या प्रेमाचा स्पर्श त्या प्रत्येकाला कोणत्या तरी माध्यमातून होऊ दे। त्यांच्या जीवनामध्ये आशेचा नवा दीपक त्यांच्यासाठी तू पेटव। मानवतेवरील त्यांचा विश्वास कधी ढळू देऊ नकोस, ही प्रार्थना तुझ्या पवित्र चरणाशी आज मी करीत आहे। आमेन। Born on November 11th, 1888, Maulana Abul Kalam Azad was one of India's most influential freedom fighters. He was a noted journalist, writer, and poet, as well as a prominent political leader of the Indian National Congress. He was the first education minister of independent India. His birthday is celebrated as National Education Day. Let's watch a story on Maulana Abul Kalam Azad. As a child, he was not like other boys of his age. Even his games were unique. He used to line up some boxes and pronounce it to be a train. Then he will sit on a box and say, give way for the Maulana. From Delhi is on his way." Then he would get down from the box and walk deliberately like an elderly person. Azad was a very studious and intelligent boy. Once, when he was studying, a thief broke into the house and robbed 7,000 rupees. Next day, when the loss was discovered, Azad said, "Please don't abuse him. He must be in great trouble to commit such a crime."
we should rather pity him. मैं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हूँ। मुझे एक भारतीय होने पर गर्व है। मैं एक संयुक्त एकता का हिस्सा रहा हूँ जो कि भारतीय राष्ट्रीयता है। अगर एक विशेषता जो आधुनिक भारत को दूसरों से अलग बनाता है वह लोकतंत्र की भावना का विकास है जो अपने सभी नागरिकों को अवसर की समानता प्रदान करता है। मेरा मानना है कि हमें एक पल के लिए भी यह नहीं भूलना चाहिए कि हर एक व्यक्ति का यह जन्म सिद्ध अधिकार है कि उसे बुनियादी शिक्षा मिले। बिना इसके वह पूर्ण रूप से एक नागरिक के अधिकार का निर्वहन नहीं कर सकता। दिल से दी गई शिक्षा समाज में क्रांति ला सकता है। हमें इस बात का एहसास होना बेहद जरूरी है कि आत्मविश्वास से ही आत्मसम्मान आता है। पेड़ सभी लगाते हैं परंतु उसका फल केवल कुछ ही लोगों को प्राप्त होता है। हमें जीवन में निराश नहीं होना चाहिए, निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए। अपने सपने सच करने से पहले आपको सपने देखने होंगे। महान सपने देखने वालों के महान सपने हमेशा पूरे होते हैं। अंत में यह कहना चाहता हूँ कि अगर आप अपने मिशन में सफलता हासिल करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको अपने लक्ष्य के प्रति पूरी तरह से समर्पित होना जरूरी है। जय हिंद। Intelligence plus character. That is the goal of true education. We may not be able to prepare the future for our children, but we can at least prepare our children for the future. Born on November 14, 1889, Pandit Jawaharlal Nehru was the first Prime Minister of independent India. His birthday is celebrated as Children's Day. Let us learn more by watching this video. Jawaharlal is not only the first Prime Minister of India, but a foremost leader in our struggle for independence. He was born in the year 1889 to an advocate named Motilal. His mother was Swarupa Rani. Being a rich family, Nehru was taught at the home by the private tutors. He went to England for further studies that included a degree in law. After returning to India in 1912, he began to practice law. Like his family, Nehru was also interested in fighting against the British who were ruling our country. Incidents like Jallianwala Bagh, where hundreds of people were butchered, have provoked Nehru to devote his life for independence. He worked along with Gandhi in the Indian National Congress that fought against British. As the struggle for independence grew serious, agitations such as non-cooperation movement shook the foundations of British Empire. Nehru got arrested on several such occasions, but he has utilized even the prison for the benefit of the mankind. He has written two great books named Discovery of India and Glimpses of the World History. From the jail, Nehru was unanimously elected as the Prime Minister of India. With the newly formed country and newly achieved independence, it wasn't an easy task to manage a huge nation like us. Nehru, with his skills in planning, has led the national bravery. He gave importance to health and technology by initiating institutions like the AIMS and IITs. Though a busy leader, Nehru always loved to spend his time with the children. In fact, he started wearing rose on his chest after a boy pinned it to him. Children called him Chacha Nehru as they treated him as their uncle. So, when India wished to have their own Children's Day, it immediately chose the birthday of Nehru, who loved and led the young generation into the future. Thank you, Sir Cyril,
for the eye-catching digital poster to celebrate Children's Day and National Education Day. Children, you are the world's most valuable resource and the best hope for the future. Miss Elsie has prepared a delicious cake for the occasion. We will commence the celebration by learning from Miss Elsie this trendy method of creating a fun pull-me-up cake. Okay. So the things that you require to make this pull-me-up doll cake are: you require a doll. You can make any cutout of a doll. Okay. Then you require a pull-me-up sheet in order to pull it up. I have baked a small cake just to decorate the pull-me-up doll cake. Now you have to take a knife. Ask your parents to slice it in 3 or 4 layers. This is my first layer. And then we go for last and the fourth layer. Again we apply the first layer so that the layers remain soft and moist as you can see the cake. I am going to use this spatula and just cover this cake with a cream. As you can see, I am just turning my spatula around. We cover all the sides with this frosting or whipping cream. We are going to give it a shape of a doll. As you can see now, the shape is completely changed now. This is a normal plastic sheet. You have to just roll it over on it in order to smoothen the surface of the cake. Now we have transformed the cake into a nice conical shape. Now this. You have to just hold it. Okay, I'm going to take a piece of a silicone and just, as you can see here, what I'm doing is I am holding it tight. With the help of the silicone, I am forming a nice circle. Now we are going to show you how we are going to use it on our cake today. Now, what I have done is I have taken a toothpick and I have stuck it with the help of sellotape. And this is a cutout of a dog. I am only going to insert it inside this. I hope you can see it. Now, our cake is almost ready. Now, Erika, hold this sauce for me. Okay. Very good. Very nice. Cut this sauce bag open and try to pour the sauce inside it. Erika will help me to pour the sauce. We are going to pour all the sauce all around this. Squeeze it nicely till you drop every bit of sauce in this. Now what we are going to do is we are going to pour our glitter over it. Decorate the dress of our doll. Now Tagma is going to help us put the glitter into the sauce. 1, 2, and 3. So children, today we showed you how to make this beautiful pull-me-up cake. Happy Children's Day!
Children, sit back and enjoy the mono act by our very own Sadharmendra. Given the changed scenario regarding online studies from home during the current pandemic, this mono act will not only entertain you but also educate you. हेलो चिल्ड्रन, बाल दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैंने इस मौके पर आपके लिए एक वन एक्ट प्ले तैयार किया है जिसका टाइटल है पछतावा। ये आपको एंटरटेन भी करेगा और इसमें साथ में एक मैसेज है जो आपको ज़रूर लेना चाहिए। उम्मीद है आपको ये पसंद आएगा। तो पेश है आपके सामने पछतावा। क्या शॉट मारा यार, मजा आ गया। हाय समर्थ, क्या हो रहा है? अरे क्या मैच चल रहा है रे यार, जबरदस्त। आज तो ना अपन का फेवरेट टीम जीतने वाला है पक्का। मैच के अलावा कुछ और भी ध्यान में है? बोले तो? कल से अपने एग्जाम्स है, तैयारी हो गई तेरी? तैयारी तैयारी? अरे ऑनलाइन एग्जाम है रे, छाप देगा अपन। क्या तैयारी वारी करने का है? मतलब तू नकल करेगा? अरे नक्कल के लिए भी ना अक्कल मांगता है जो तेरे जैसे लोगों के पास है नहीं। क्या पिछली बार पढ़ पढ़ के तेरा कितना परसेंट आया तेरे? 85%। अपन का बिना पढ़े 80% आया था। तू ना एकदम पागल है यार। काय को इतना मगजमारी करने का, छापने का, ऑनलाइन एग्जाम है। देखना तू एक दिन पछताएगा। देख भाई, अपन को तो सीधा मंत्र है आज में जीने का, इतना दूर का सोचता नहीं अपन। वो अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, लिव इन द परसेंट, है ना? लिव इन द प्रेजेंट। हाँ तो वही तो बोला ना मैंने। अभी देख तू दिमाग का ना मेरा दही तो बना। अगर तेरे को साथ में आके मैच देखने का है तो बैठ, नहीं तो लिव। हाँ बाबा, जा रही हूँ, देख तू अपना मैच। क्या क्या मार लेना यार तू, मजा आ गया शॉट। वाह, मेरा फेवरेट प्लेयर। हे समर्थ, गुड न्यूज सुनी तूने? स्कूल खुल रहे हैं। क्या हुआ, तू इतना परेशान क्यों है? अरे जो तेरे वास्ते गुड न्यूज है ना, वो अपन के वास्ते बहुत बड़ा बैड न्यूज है रे। वो कैसे? अरे स्कूल खुलने के 15 दिन के बाद अपना प्रीलिम्स है। हाँ, अभी अपन अब तक तो चीटिंग करके पास होता था, इस बार अपना पूरा डब्बा खोल। मैं तो तुझसे पहले ही बोलती थी, लेकिन तू सुनता भी नहीं था। मुझे बहुत टेंशन हो रहा है रे। मालूम, मेरे बापू ने मेरे पिछले एग्जाम देख के ना मेरे को ये मोबाइल गिफ्ट किया था। अभी वो मेरे मार्क्स देखेगा ना तो ये तोड़ेगा, साथ में मेरे को भी तोड़ेगा रे। वो पुलिस वाला है, तू जानती है ना, उसका हाथ बहुत भारी है। मेरा क्या होगा अभी? अच्छा, रोने से कुछ नहीं होगा। अभी 15 डेज है, मैं तेरी स्टडी में हेल्प करूंगी। इतनी गारंटी है कि तू कम से कम फेल नहीं होगा। सच्ची? मुच्ची, लेकिन एक शर्त है। बोलना, अपन तेरा सारा शर्त मानेगा रे। आगे से तू कभी चीटिंग नहीं करेगा और मन लगाकर मेहनत करेगा। आई शपथ, गॉड प्रॉमिस। तो चल अब स्माइल कर। एक बात बोलूं? बोलना। बोले तो तेरी स्माइल एकदम झकास। You are precious to us. And so here is a Children's Day song sung for you by our very own teachers and wishing you a very happy Children's Day. Who has touched our lives,
and a happy Children's Day. And a happy Children's Day.